Assalamu alaikum. This is Shreem bin Muhammad Rafi, your host, and this is your YouTube channel, Zamir Universal. We often talk about America as superpower, and we do not like to go back in history and see whether America is really a superpower and has been a superpower, and what criteria it meets to be called a superpower. Now, as a practicing Muslim, I and I'm sure 1.5 billion Muslims all across the world feel that the only superpower in this universe is God Almighty, our Creator, and no one else. All men are destined to die. And when they are destined to die, how can they have superpower? No doubt there have been some, I think, mentally deranged and ambitious dictators who have tried to play God, and that's a mental illness which you can trace from Namrud to Pharaoh to Hitler and to even, I think, in the last 100 years, many head of a state in the communist world, and I'm sure it's also in so-called crippled or a democracy which varies from a country to country. Now, what proof do I have to say that America is not what is it today? For a moment, there are many, I think, countries, there are many people, there are many empires who had temporary glory for a while, some for decades, some for centuries, but ultimately you see that they perish. You can go back and see the fate of Roman Empire, then you can see the fate of British Empire, and I am sure if you go back into the pages of history, you will and you can trace the history of Pharaoh's empire, Namrud's empire, and the Hitler's empire, Stalin's empire. I can go on, and Mao Zedong's empire. Where are they today? You have removed even their statues. You have even burned their little red book. They are nothing but ruins spread all across the globe. Just as a reminder that how you claim that you are a superpower, and the pride of a human is always had a fall. Now I tell you, I want to take you back into the history. I was going to do this vlog in Urdu, but I think in order for a wider audience, I am doing this in English. Now the story goes back to 1800, and this is a war between the Americans and the Ottoman Empire and the governors of Morocco, Libya, Tunisia, and they were the one who were, I think, insulted, who were refused to pay that the American and Swedish ships which pass through the Mediterranean, they pay a fee and they subject their fleets to inspection, see what they are carrying. Sweden entered into this war with the Ottomans in 1800 and the Americans in 1801. This war between the United States and the Ottoman Empire, it lasted up until 1804. So, for 1801 to 1804 is 4 years. It was the first war that America fought outside its borders
when the Americans refused to pay the tribute to the Ottoman ruler Yusuf Pasha al-Karmanali for the entry of the American fleet into the Mediterranean. This led to the anger of the governor, who ordered the breaking of the American flagpole in the American embassy in Tripoli, Libya, insulting the Americans and their ambassador and asking for the expulsion of that ambassador. United States President at that time was Jefferson. He sent the United States fleet to discipline the governor of Tripoli, Yusuf Karmanali, for insulting America. The naval war began, but soon ended with a catastrophic end for America, where the American fleet was besieged and its largest ship, the Philadelphia, was captured. And more than 301 American soldiers on board, they laid down their arms and they were captured and made POWs, or prisoners of war. When the America was unable to recover its ship, it sent spies and burned the Philadelphia ship so that the Ottomans or Libyans or the governors or the Moroccans or Tunisians could not use that ship. Now the Americans have been difficult ever since the creation of America, because it's a country of hodgepodge and immigrants from all across the world. There is not one single nationality which harbors this land. From slaves to the Native Americans to the Irish, British, Scottish, and English, and Europeans, both Eastern and Western, and that's what constitutes the total population of the United States. Americans did not surrender. Instead, they deliberately spread rumors to start disputes between the governors of Tripoli and his brother Ahmad Pasha al-Karmani in Egypt, and he was bribed with money and beautiful women brought from America specially to entice him. नाज़रीन ग्रामी, सल्तनत उस्मानिया या खिलाफत उस्मानिया सन 1299 से सन 1922 तक कायम रहने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के जमाने में यह सल्तनत 3 बरआज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरक वुस्ता और शुमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके ज़ेरे नगीन था। लेकिन फिर इन पर ऐसा सवाल आया कि इनकी औलादें भीख मांगने और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। ये सब कैसे हुआ और आजकल उस्मानिया खानदान के चिश्मो चराग कहां हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख इस्लाम का वो स्या दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद शिशम की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और मुस्तफा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई और सुल्तान मोहम्मद शिशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बजरिया बरतानवी बहरी जहाज माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तुगरुल आफंदी भी इनके हमराह थे और बाद अज़ां वो वहां से इटली चले गए और उन्होंने जिंदगी के आखिरी अयाम अतालिया में गुजारे। इनकी वफात 16 मई सन 1926 को सान रीमो इटली में हुई और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक जिंदा रहे, उस्मानी खानदान के सरबरा हेड ऑफ द हाउस ऑफ उस्मान रहे। दूसरी जानिब सन 1922 को उनके करीबी अजीज अब्दुल मजीद आफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 में खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे और फिर इसी के साथ साथ तमाम उस्मानी खानदान को जिलावतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाजा करें कि एक ऐसा खानदान जो 600 साल से जायद अरसे से एक जगह पर हुकूमत करता रहा, उसी खानदान के लिए उनके अपने मुल्क में जगह तंग हो गई थी। उस्मानी खानदान को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है।
जिला वतन होने वाले खानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक्त 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, बच्चे, शहजादियां और अजवाज वगैरह शामिल थी। कुछ नौकर वगैरह भी उनके साथ थे जो अपने मालकों का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, जबकि इसके साथ इस खानदान के तमाम दामाद भी जिला वतन कर दिए गए, यानी तमाम शहजादियों के शौहर भी जिला वतन हो गए, लेकिन इनको एकतरफा पासपोर्ट दिया गया। सो उन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा, कभी वो इनकी सल्तनत में शामिल था, लेकिन ना तो अंग्रेज हुकूमत और ना ही वहां के शाह फवाद ने इनको इजाजत दी। फिर शाम का कसद किया कि वो भी एक करीब मुल्क था, तो तुर्की की हुकूमत ने उधर जाने की इजाजत नहीं दी। फिर कुछ अफराद लबनान के शहर बैरूत चले गए, जो उस वक्त फ्रांस के जेर तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल मजीद फ्रांस के शहर नाइस चले गए, वो भी तब जब शहजादे अली वासिफ की कोशिशों से उनको फ्रांस की हुकूमत ने पासपोर्ट जारी कर दिए। ये वक्त उस्मानी खानदान के लिए बहुत कठिन था। इन्होंने गुर्बत का मुंह देखा, क्योंकि वो तो अपना साजो सामान और रुपया पैसा भी अपने महलों में छोड़ आए थे कि अवाम की मदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद खानदान का सरबरा वो मुंतखब होना शुरू हुआ जो पूरे खानदान यानी आले उस्मान में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा हो। सुल्तान मोहम्मद शिशम के इटली में इंतकाल कर जाने के बाद 1926 में अब्दुल मजीद दोम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए और 1944 में उनकी वफात पेरिस फ्रांस में हुई। इनके बाद 1944 में अहमद निहाद चहारम उस्मानी खानदान के सरबरा मुकर्रर हुए। आप सुल्तान मुराद पंजम के पोते और शहजादे मोहम्मद सलाहुद्दीन के बेटे थे। ये 1937 में फ्रांस को छोड़कर लबनान मुंतकिल हो चुके थे और 4 जून 1954 को बैरूत लबनान में ही इनकी वफात हुई। इनके बाद इनके भाई शहजादे उस्मान फौरन उस्मानी खानदान के सरबरा बने, जो फ्रांस में ही रिहाइश पजीर थे। अपने भाई के बरक्स इन्होंने जदीद तर्ज जिंदगी इख्तियार किया और फिर 19 मई 1973 को नाइस फ्रांस में ही इनका इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ। नादिग्रामी, इनके बाद शहजादे मोहम्मद अब्दुल अजीज दोम खानदान आलिया के सरबरा बने। आप सुल्तान अब्दुल अजीज अव्वल के पोते और शहजादे मोहम्मद सैफुद्दीन के बेटे थे। ये भी फ्रांस में ही मुकीम थे और इनका इंतकाल भी 1977 में नाइस फ्रांस में हुआ। इनके बाद उस्मानी खानदान के सरबरा अली वासिफ मुकर्रर हुए। आप अहमद निहाद के बेटे थे। आप 1935 में मिस्र में सकूनत पजीर हो चुके थे और 9 दिसंबर 1983 को अलेक्जेंड्रिया मिस्र में ही 80 साल की उम्र में फौत हुए। ये तरतीब ऐसे ही चलती रही और अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अब तुर्की में उस्मानी खानदान के बहुत से अफराद सकूनत पजीर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के पोते अब्दुल हमीद काई खान तुर्की में उस्मानी खानदान की नुमाइंदगी करते हैं। ये खानदान आज भी जिंदा है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहा है, जिनमें अमेरिका, बल्गराद, हंगरी, फ्रांस और मिस्र वगैरह शामिल हैं। काफी अफराद इस्तांबुल, तुर्की में भी मौजूद हैं। आजकल उस्मानी खानदान के सरबरा बायजीद उस्मान हैं, जो 2009 से ताहाल जारी हैं और वो अपने खानदान के साथ न्यूयॉर्क, अमेरिका में मुकीम है। सन 1954 में उस्मानी खानदान की खवातीन को तुर्की में आने और रहने की इजाजत मिल चुकी थी और 1974 में मर्दों को भी तुर्की में रहने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन ज्यादातर ने बाहर रहना पसंद किया। डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे साथियों, दूसरे मुआशरों की तरह मुसलमानों की तारीख भी भाइयों, बाप बेटों और दीगर रिश्तेदारों में तख्तो ताज के लिए जंगों और कत्ल या अंधा कर देने वाले वाकयात से भरी पड़ी है। शोरशों और साजिशों से बचने के लिए तुर्की की इस्लामी खिलाफत उस्मानिया में यह तरीका निकाला गया था कि सुल्तान के बाकी तमाम भाई मार डाले जाएं। आजकल एक ड्रामा सीरीज सुल्तान अहमद अव्वल और उनकी अहलिया कुसुम सुल्तान की जिंदगी पर चल रही है। इन्हीं सुल्तान अहमद अव्वल के वालिद सुल्तान मोहम्मद सोम की तख्त नशीनी सन 1595 में हुई, लेकिन उस दिन को तारीख में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहां से 19 शहजादों के जनाजों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान महमद सोम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में उस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रिवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घोंच कर हलाक कर दिया गया था। शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया, जिनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जिसामत का मालिक था, इल्तिजा की कि आका मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी जिंदगी इस तरह खत्म मत करो। जिस पर गम से निढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज ना बोला। ये जनाजे गलियों से गुजरते देखकर इस्तांबुल के शहरियों के दिल दहल गए थे। इस हवाले से मशहूर मुअर्रिख
لسیلی پیپیرس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے ایک روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے اور استنبول میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوئم کے والد سلطان مراد سوئم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوئم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوئم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے، اور باقی تو بچے ہی تھے اور ان کی جانشینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوئم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی ایک کتاب میں سلطان سلیم دوئم کے یہودی طبیب ڈومینیکو کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا: لیکن سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا، اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔ سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارے جانا کسی بغاوت یا کسی جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوئے تھے۔ جس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا۔ The Americans did this dirty job, and they continue to do up until today through their CIA and their covert operations. And they've been doing it in Afghanistan, they've been doing it in Iraq, they've been doing it in Syria, they've been doing it in Palestine for centuries. Now, against the Tripoli's governor, they did all this to change the regime. He ruled and promised him authority over Tripoli, Libya, but that did not work. The Americans prepared a huge army to invade the city of Darna, which is the eastern Libya, and avenge its first defeat, which was really a humiliating defeat for the so-called superpower in 1801. But the governor of Tripoli had sought the help of forces from Morocco, Algeria, Tunisia, and the Ottoman Empire, and the battle ended with another gruesome defeat for the Americans, with the American army having lost 1,800 soldiers who were killed in one single day. 700 American soldiers were captured and made prisoners of war, and the rest of the American army was trapped. The defeat ultimately led to America signing a humiliating agreement with the governor of Tripoli, Tunisia, Algeria, and Morocco, and according to which the America agreed to pay compensation to the Islamic countries for every soldier killed, and also paid double the previous tribute and rendered an apology to the 3 Islamic countries. To this day, you will find the anthem of the United States, the Navy, which has not changed since that time, the beginning of which says, "From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli, we fight the battles of our country in the air, land, and sea." This extraordinary story shows you the extent of ignorance of the Muslim world
the whole Islamic world, since this has been history, been hidden, twisted, so that the Muslims could not know that for 600 years the Ottoman Empire ruled nearly more than half the world, and you see the Muslims all across the Balkans. You see them in all, I think it's in Rome, you see in Germany, you see in Asia, you see in whole of Arabia, you see in the Minor Asia, China. So that was the map which is being shown to you in this vlog, is that's where the Ottoman Empire had all these countries which are now countries. They were the provinces of Ottoman Empire. And this extraordinary, I think, and a very humiliating defeat by this so-called superpower and the most cunning, who started to supply women and with the false pride refused to pay the tribute, and how it was, I think, swallowed back. And this shows to you that the only superpower in this world and on the universe is our Creator, the Almighty Allah Subhanahu, and not America, Russia, China, or Israel, or anyone. This is a momentary glory. Some people have tummy ache, they cannot digest, and they are small people, and they have a microcephalic head, and with that head, what they harbor in that small, tiny, microcephalic head is hatred, prejudice, bias, and you can see the typical example of this in the illegal and illegitimate state of Israel, which was created by the same dirty, and I think that proud and false proud, and living in that, I think, in their own dream that they are a superpower till today. And it's the one nation which has crossed the borders and gone into the other countries, and as a punishment, because they never forgot those two humiliated defeats by the Muslims, they have punished the whole Arab world by, I think, such a enormous, I think, barbaric destruction of Iraq, which had a very high standard of living, and Kuwait, Libya, Syria, Yemen, Lebanon, Palestine, Egypt, Jordan, and you name it, and then not the least Vietnam, Afghanistan. But predominantly they punish the Arabs, they punish the Muslims, and till today, because they joined hands with the whole Christian world, with the head of states as Christians, the state itself dominated by Christians, head of state Jews, and state also inhabited by majority of Jewish people gathered illegitimately as settlers from all around the world, right into the heart of the most sacred place on Islam, the first Qibla. And this is that barbarism, that revenge is going on till today. When you hear and when you see that how they created the League of Nations in 1940s, converted into the United Nations, and kept all the offices there in New York, how they fund it, how they dominate it, how they use it for themselves. Instead of solving the world disputes in the Security Council, they create that because they benefit from that. They are protected by nature, by two great oceans,
Atlantic and Pacific. So no one has gone and attacked them, but they have come out of their borders and gone and attacked and interfered and changed the regimes everywhere. Most recently, they have done that in Pakistan. And see what they have done to a common man in the street in Pakistan. See the poverty, see the economic situation, see what's happening to that country, that almost everything the Pakistan possessed has been either mortgaged, the parks, the airports, the steel mill, the harbor, the Karachi harbor, and I think the assets abroad, the American, Pakistan embassy building and the hotel, which cost millions, have been mortgaged. Now, this whole, I think you can trace back to the revenge of Americans, and you can call the same thing how they cheated Saddam Hussein and said through their ambassador that we never interfere in the inter-Arab affairs, and that Bush with a hypothyroid who fainted many times and was taking the replacement hormone therapy of thyroxine to survive. And usually the people who are mentally retarded, who have low function thyroid gland. And if this happens while they are still in the mother's womb, they are not normal with a normal IQ. And you can see the way that man played havoc, and his son wanted to take the revenge. And both, when you put both father and son together, they destroyed the peace of this world. They destroyed the Arab world. They destroyed the Middle East. They destroyed, I think, stabbed the Islamic world and introduced words like radical Islam, and kept on pouring billions into Israel to keep that, dagger which they had put in the back of the whole Islamic world, so that it keeps bleeding, so the wound keeps fresh and the pain remains there, only to punish and avenge the defeat of 1801 to 1804, and subsequently the second one, which again ended up in a humiliating defeat. So that is the end of story of a so-called superpower, proving my point and informing this to the whole of the Muslim world that you have ruled this world for 600 years, and imagine that you have not done even a smallest piece of cruelty on any nation, and for 600 years spotless, and full of mercy, you had complete freedom for Christians and Jews to practice. They could build their synagogues, they build their churches, they could practice their religion, they could live peacefully among the Muslims all across the Ottoman Empire. Why is it now you see that the Muslims all across the world are being persecuted, humiliated, their prophet, I think, being targeted? The holy book revealed by Almighty Allah, the Quran, is being burnt. So Sweden, those who look upon Sweden as burning of the Holy Quran is some sense, he started war with the Ottomans in 1800, a year before the Americans. The Americans then entered into it, and both refused to pay the tributes while their ships were passing, and they were having the trade route used and not paying to the Ottoman Empire. Now, I think my video is becoming long. With it, I'm playing a small audio which is in Urdu, but I think the pictures, a small audio, which you see there, or a video, you see that the head of Jews, the man who dreamt of Israel, how he is bending before the ruler or the Sultan of Ottoman and the Sultan Hamid, and how is he kissing his hand. Look at the humiliating posture he is keeping. Today, I think the table's been turned, and now you may look what is they doing to the Muslims.
instead of being, and at least being grateful that the Muslims were kind and they did not take any of their liberties, civil liberties, the basic rights, the religious rights. But what they are doing, the Israeli soldiers who have dual nationality, they are Americans as well as Israelis, the illegitimate state, they beat up the women, they occupy their homes, and they are throwing them out of their motherland, which occupied by the Palestinians, the state of Palestine, for centuries. And this is on the behest of this so-called false superpower who had a humiliated defeat in 18th century in the hands of the Ottoman Empire. I take leave. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर